इसी तरीके से एक हमने एनर्जी असेसमेंट, अभी हमने एक एक्टिविटी की थी फैसलाबाद में सर इंडस्ट्री में, उसकी कोई कंजम्पशन ऑप्टिमाइज करने के बाद प्रोसेस और 25% नेचुरल गैस कंजम्पशन कम होगी, 25%, इट्स ऑन द रिकॉर्ड बिलिंग में। तो वो 2-3 महीने के बाद क्या हुआ कि गैस यूटिलिटी कंपनीज जो हैं वो उसके मीटर टेम्परिंग का केस चौक नोटिस भेज दिया गया उनको एज सच। वी टुक ए स्टैंड ऑन दैट एज सच कि नहीं, हम इनकी सेविंग्स को, हमने देखा था कि अगर फीड वाटर इनका 90 में जाता था, सॉरी 40 डिग्री पे जा रहा था, तो अब 70-90 पे तो हम खुद दे के आए हैं। तो उसमें डेफिनेटली इदारे से बहुत से हमें रोका जा रहा था कि भाई आप ना जाएं, दिस इज समथिंग, आप केस में उलझ जाएंगे और ये। तो वी जस्ट स्टेटेड कि वी नो दैट वी हैव सेव्ड दिस मच अमाउंट ऑफ गैस, वी और हमने ऑन किया करना है इस सेविंग को, तो वी शुड सपोर्ट दैट पर्सन जिसने 2.5 करोड़ रुपया ओगरा में सिक्योरिटी में रख दिया है कि भाई वो चोर नहीं है, अगर चोरी करनी होती तो 70 या 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ना करता एनर्जी सेविंग के ऊपर ऐसे। सो एनी हाउ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि अगर हमारे पास लीगल पावर होती तो हम उसे लीगली डिफेंड करते। तो इसमें क्या हुआ कि हमें ओगरा के केस हेयरिंग में जाना पड़ा और हम वी डिफेंडेड दैट, ऐसे गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ केस किया गया और अल्टीमेटली द केस वाज डिसाइडेड इन आवर फेवर दैट द सेविंग वाज ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी, नॉट ड्यू टू मीटर टेम्परिंग। एंड क्योंकि उसमें क्योंकि मीटर यूटिलिटी कंपनीज दे आर ओनली एक्सपर्ट अप टू मीटर लेवल, एंड आफ्टर दैट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स द प्रोसेस बेंचमार्क्स एंड इवन के जो उनके अभी कैप्टिव पावर जनरेशन की जो लाइसेंसेस लिए जाते हैं, तो अगर अक्सर आप जाके देखेंगे उसमें, तो उसमें एफिशिएंसीज जो शो की जाती हैं लिखी भी होंगी, आई कैन शेयर रिकॉर्ड्स में, जो पुराने रिकॉर्ड से शुरू के, तो 104% एफिशिएंसी, इट्स इजंट इट अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स? 104 पे आप किसी को मतलब आप जो है वो इतनी एफिशिएंसी पे पावर प्लांट ऑपरेट करेगा एंड आप उसको लाइसेंस जारी कर दें ऐसे। सो एनी हाउ, दीज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स जो कि हमारे लीगल हैसियत ना होने की वजह से हमें इम्पैक्ट आता है, और वही लोग समझ सकते हैं, वो कहना या राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने ऐसे। तो जिसको एनर्जी कंजर्वेशन की अभी हमें वी आर कॉन्शियस अबाउट दोज पीपल जिनकी अभी एनर्जी एलईडी लाइट्स या एसएमडी लाइट्स जिनकी जो है फंसी हुई हैं पोर्ट्स के ऊपर, डैमेज के उनको पड़ता जा रहा है सच। तो वी आर पुशिंग फॉरवर्ड कि अगर हमारे हायर अप्स की जानिब से उसको कोई अमली जामा पहना दिया जाए, तो चेयरमैन हैव एग्रीड बेसिकली कि एलईडी के ऊपर जो है वो अगले जो रिवाइज करके उसके ऊपर जो है एसआरओ के ऊपर हम लोग एग्जाम्पशन जो है वो दे देंगे ऐसे। सो दिस इज समथिंग, एक ओवरऑल मैंने आपके सामने तज्जिया पेश किया एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से, और डेफिनेटली ये अगर एक्ट हमारा जो है अगर ये इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होता है, तो लाइकवाइज जिस तरह इंडिया में 2001 में एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उनकी एनुअल एनर्जी इंटेंसिटी इट डिक्लाइंड टू 10 to 15%। सो हमारा तो अगर देखा जाए तो वी आर हमारी एनर्जी कंजम्पशन या डिमांड उनके बराबर में इतनी ज़्यादा, मतलब इट्स पीनट बेसिकली। सो इफ़ वी कैन हैव सच काइंड ऑफ प्रॉपरली इम्प्रूव्ड वर्जन है उनके, तो वक्त के साथ इम्प्रूव होते गए ना। हमारे पास अगर फुल फ्लेज पैकेज आ गया है, तो व्हाई नॉट स्टार्टिंग इम्प्लीमेंटिंग इट बेसिकली। बहुत से लोगों ने अपने तौर पे नहीं, द प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट इन द मार्केट बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अवार्ड्स दिए जाने चाहिए, रिकॉग्निशन दी जानी चाहिए। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ दिस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड बिल इफ इट्स इम्प्लीमेंटेड। हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स, पीसी की खास तौर पे स्पोर्ट्स शामिल है, यूथ को जॉब्स चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस चाहिए, एनर्जी ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव में एस्कोज हैं, एलईडी लाइट्स के ऊपर लोग हमसे अक्सर आप पूछ रहे हैं आके कि हम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि एसएमडी समहाउ फॉल करती है एनर्जी एफिशिएंसी में, तो उसके क्या टेस्ट्स होने चाहिए, एलएमडी 180 टेस्ट या जो बाकी सर्टिफिकेशंस हैं। तो देयर शुड बी ए सेंट्रल नोडल बॉडी, क्योंकि अक्सर ऐसे इदारों ने गलत एसएमडी एलईडी भी लगाई हैं टेक्नोलॉजीज, क्योंकि एक सेंट्रल फोकल बॉडी नहीं थी या उनको उसका पता नहीं था। तो हुआ क्या कि उनकी लगा के वो टेक्नोलॉजी फेल हुई, तो उसके बाद उन्होंने दोबारा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना छोड़ दिया ऐसा। तो देयर शुड बी ए बॉडी, न्यूट्रल बॉडी दैट कैन फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर इन ईच एंड every sector of the economy, and this bill, effective implementation of this bill can ensure all this nitty-gritty to be covered as such. So thank you very much, and inshallah at the end I will answer your questions as well. Our next speaker is in-house, Ms. Amina Sohail. So I would request her to please. As introduced in the beginning, we are now going to discuss
distributed generation rules, or if they are approved in the form of regulations. These are the two avenues that are available with National Electric Power Regulatory Authority to cover this very important segment, i.e. the distributed generation. What distributed generation really is? Distributed generation, distributed resources, or distributed energy resources, or dispersed power is the use of small-scale power generation technologies located close to the load being served, and sometimes mainly at the premises of the owners of these distributed generation facilities. Who are the stakeholders? The stakeholders are mainly the energy companies, equipment suppliers, the regulator, the energy users, and financial and supporting companies. There are positives and there are negatives to this DG system. For some customers, DG can lower costs, improve reliability, reduce emissions, or expand the energy options. DG may add redundancy. For example, you must have heard the number of diesel generators that have been imported in the country due to the looming power shortages in the country. And it increases, however, the grid security even while powering emergency lighting or other critical system. This is something which has to be dealt with by the host distribution company. Now, if you look at the current situation, the compulsory acquisition of power by Central Power Purchasing Agency from public-owned generation companies, IPPs, hydel power units, nuclear power assets which are in the public domain. So that is provided by law, that has to be made in a group by the Central Power Purchasing Agency. This power, which is compulsorily acquired by or purchased by Central Power Purchasing Agency, again a public body, it has to be again compulsorily purchased by the distribution companies according to their quotas, which are again dependent on their consumer mix for ultimate supply to the end consumers. Now, as a result of this system, we are facing power shortages, not as a result of this system, but out of this scheme. What we really find is that power shortages are being faced by the industry and SMEs, and they are mainly suffering this due to priority of domestic consumers over other consumers in the different categories or in the consumer mix. So we have captive power companies as well, which in fact were also invited under proper government policies and not just by as a matter of necessity. And they have become victim of government policies and inadequate application of regulatory regime. So the solution to this whole issue comes in the shape of distributed generation. Now, there is an important role of the regulator in this whole scheme. And what is that role? That they have to set the rules or the regulations in operation. Then they have to regulate in order to promote consumer choice and uses of technological and managerial advancements in the sector. Then they have yet another step to be taken, and that is the regulatory activism. And what that regulatory act, you must have heard about the judicial activism, but here we are talking of the regulatory activism, because these regulatory bodies, they have a quasi-judicial role to play. They don't have to administrate the sector, they don't have to just administer the sector, they have to administer the sector in a manner which is judicious, which is balancing the conflicting interests. And in order to treat on this path of regulatory activism, they have to improve on the conditions for distribution licensees. The license that have been granted to almost 9 or 10 distribution companies to date, which have been carved out of the WABDA. So those conditions of the distribution licensees have to be improved, that were issued date back in 2001. And consultative papers have to be issued by the regulators, so that whatever decisions they come through, they are reached at after informed discussions over those issues. And same goes for the distributed generation. Just to give a background, that NEPRA Act that came in sometime in December 1997, and now we've almost passed 15 years of its promulgation.
and it's high time to review NEPRA law and introduce rules for a modern electric power industry. And this is something which has already been provided in the law itself. I'm referring to Section 22 of the NEPRA Act. Then there is a need for deregulation of generation, because there is hardly any service that NEPRA is putting in by granting licenses to different generators. Focus on cost-effective procurement by distribution and transmission is what is required now. There has to be a shift in the regulatory regime, and they need to focus more on how effectively their distribution companies and their transmission companies can procure power. And there are provisions. The only set of rule that they have been mandated under their act, that is power acquisition rules and power and investment rules. So these rules are still yet to be made, and there have been great opposition from God knows from which corners, that those rules have not been approved as yet, and it is very important. Competition leading to consumer welfare, economic costs, freedom of supply, and sustainable supply of power. This is all what was really envisaged when NEPRA Act was being designed, that there would be a stage when this regulator would develop the sector in a manner that there would be a competition within the sector, and that competition would lead to consumer welfare, would enhance consumer welfare, options for consumer welfare. The cost of electricity would go down, and there would be more choice available to the consumers in terms of choosing which supplier they want to have for the electric power, and that supply would definitely be sustainable. Now, the background of the draft distributed generation rules that I'm here to introduce, that under Alternative and Renewable Energy Policy of 2006, the alternative and renewable energy regime in the country that was being envisaged, they thought that if the renewable energy resources could be promoted, then there is an avenue if those alternative and renewable energy resources could be plugged to the distribution systems, and the power that is produced by those renewable energy resources, they are owned by the consumers, and those consumers are also definitely the consumers of the distribution companies as well. So whatever is over and above their own use, as explained by Dr. Ashfaq as well, it's been going on at PEC and Planning Commission, their solar power panels, they are inletting the supply which is over and above their own use into the ISCO system, and that is being procured by ISCO on net metering basis. So that was the concept under the ARE policy 2006 that was introduced, and it was not just on net metering basis. There were also provisions for wheeling, and the provisions for wheeling are also available under the general regulatory regime or the NEPRA law and the licenses and the rules that have been prepared thereunder. That is, an electricity that is produced by consumer A at point, say as B, can be transported to any of its consumer or any of its person of choice, and the distribution company would be mandated to wheel that power, or kind of a courier service would have to be provided by the distribution company. We are also going to look at those concepts later in the later slides. Now, this draft, there is another alternative and renewable policy that hasn't been promulgated, notified as yet, or announced by the government as yet, and it's being prepared for the last almost 5 years, and it's lying in the draft form. So that draft ARE policy, it further shaped up the whole concept. Now, ARE focused application of distributed generation, studies have proved that if we incorporate net metering arrangements, the ARE facilities would itself pick up, or their usage would pick up. So that has been another reason that much focus has been there in the draft ARE policy, and that has been proved in a number of jurisdictions, even in the region we fall in, such as Sri Lanka, Bangladesh, and India. Utility in all forms of generation, resource neutral, but what the draft distributed generation rules are proposing, that it would be resource neutral, that irrespective of whether it is a renewable energy facility or
any other resource, if there is power which is over and above or in excess or in some other forms, that can be distributed by its owner under a proper regime. Now, the concept of net metering is that the next two slides, I must disclose, I could not somehow put it somewhere close by. They've been produced by one of my very senior colleague, Barrister Ijaz. He's heading ACLAL. And we worked together on this project of on development of distributed generation rules for NEPRA. So he had developed these two slides. And the concept of net metering is that there is this RE facility. There is energy flow from the RE facility to the distribution company, and the payment stream from distribution company to RE facility, and only in energy. And the payment would be made only if the in energy, that is the energy that is being provided by the distribution company to the renewable energy facility, exceeds out energy. Normally, it is not the case that the energy flows from any consumer to the distribution company. It's always from the distribution company to any of the consumers. But in case of net metering, it's two-way, and that is why we call it bi-directional meter, that is used in order to measure the amount of energy that has flown from two sides. So rollover of credit energy to successive billing cycles. There are no, as such, no payments are being made by the distribution company to the consumers. It's just that whatever excess energy that has been used by the renewable energy minus the in energy that has been supplied by the renewable energy facility, the DISCO, that is net off or set off, and the remaining is billed to the consumers. And similarly, if there are credits or the energy that has been supplied by the renewable energy resource to the distribution company, so that is adjusted in the successive bills. So no payments are made as such by the distribution company to the RE facility. So there are net savings, and I hope in our later part of the program, Dr. Akram Sheikh would be able to, Dr. Shafaq would be able to explain as to how much savings they have been made by PEC as yet. Now, the concept of wheeling, as I had earlier told you, that there is a possibility that we can use the distribution facilities of the host distribution company for taking or wheeling our power, which we produce at point A to a point B, where we would like to take, if we have another unit at point B, so we don't need to produce separately power at point B, and we can always wheel that power or transport that power with the help of distribution companies, distribution facilities, and all that we have to pay. Those are the wheeling charges or the use of system charges in the NEPRA terms. And of course, there are compensation if there is a shortfall or the losses that are there, because as you know, there are certain technical losses that cannot be avoided while energy flows from point A to point B. So this is the concept of wheeling, where the charges, again in the earlier case as well, are the same, which are determined by NEPRA. In the case of wheeling as well, use of system charges are to be developed by approved by NEPRA. The banking, again, in the case of banking, the possibility is that the RE facility or any of the resource neutral facility, consumer owned facility, they can bank or they can store their power, which is not actually stored, because energy right now, we don't have really those kind of electrical gadgets available apart from the small batteries that could store energy, but which are available elsewhere in the world. So that energy is just in terms of units is supplied to the distribution company for retrieval at a later point in time when it is needed by the consumer. So this is the concept of banking. Now, the outline of draft DG rules which are pending with NEPRA, what it really provides is that there will be must acquisition on net metering basis or wheeling or banking of power produced by DGs, subject to, of course, technical limits. And very important,
we have suggested that there shouldn't be any need for generation license, because that would really discourage the whole concept behind the distributed generation, that there should be some freedom on the part of the consumers to generate power at their whim. And how that has been resolved, that approval of registration forms for DGs in the draft DG rules, that there has been a form that has been prescribed in the DG rules, and those forms would be there with the distribution companies, and whosoever comes forward for net metering, for wheeling, for banking, so those registration forms would be filled in by the expected DGs, and those once those requirements are fulfilled or those registration procedure are through, then the whole process would continue, and there wouldn't be any need for a generation license from NEPRA. DISCOs to handle DGs at their end. So those DGs would be handled by the distribution companies, and that is mandated under the that would be mandated under the distribution DG rules. Agreements for net metering, banking and wheeling by and between DISCOs and DGs. So the agreements would basically be between the distribution company and the distributed generators. And even those agreements have also been designed under that draft DG rule set that has been sent to NEPRA by AEDB under the different programs that they have developed under their program for alternative and renewable energy policy yet to be announced. Tariffs to be determined as per NEPRA approval, and whatever tariff regime, the charging, the payments, that would be all that is there as per NEPRA approval. And finally, the disputes would be handled by NEPRA. So this is the outline of the DG rules that are lying with NEPRA, and they are really needed so that a number of issues that are faced by different captives, on which even NEPRA to date hasn't really firmed up its mind. It issued some of its determinations on SPPs, then there were some captive powers, and there were some new captive powers. So there are series of divergent regulatory views on this particular subject. So in order to really appease all those concerns of the prospective investors and particularly consumers who are in dire need of sustainable power, these DG rules are really need of the hour. Thank you. Thank you, Ms. Amina, for giving a detailed view of the requirements to be met on the part of NEPRA. In other words, telling physician, heal thyself, because NEPRA is a very important player in the power sector, and they have to put their house in order to facilitate conservation and an efficient use of energy. And these are some of the measures that are due from them, and it is hoped that they will take early action and that are required for energy conservation and efficient use of energy and the use of alternate energy. But here you would notice that this is an area, the conservation and efficient use of energy is an area where the ball is mostly in the court of the consumers rather than the suppliers. I mean, when we talk of supply side, it is always the suppliers who are on the mat. It's always they who are being asked to do more, who are being criticized for not doing things. But this is an area where the consumers will have to play a very important role, because unless the consumers cooperate, unless the consumers take an active part in it, all these rules, regulations, laws and measures and the facilitating actions taken by the government and the suppliers and the distribution companies will come to a naught. And therefore, this aspect of the energy conservation and energy efficient use of energy is very important, and the consumers have to be made aware of this. Well, I think it's now time for opening the house for questions, and I would request the questioners to please identify themselves and please be brief. Thank you very much. सवाल है वो एनर्जी बिल्डिंग कोड्स के बारे में है। अभी सुनते हुए कुछ ज़हन में इसमें कुछ बात आई है। उसमें पहली चीज़ तो ये समझ आई है कि जो बिल्डिंग कोड्स बनाए गए हैं बिजली बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए बनाए गए हैं।
और जो प्रॉब्लम आगे जो चेक एंड बैलेंस रखा गया है वो एनर्जी ऑडिट रखा गया है, और इस तरीके से वो उसको नाप तोल सकते हैं। लेकिन मेरे ज़हन में सवाल ये आ रहा था कि फर्ज करेंगे 100 किलोवाट्स की तकरीबन 1 लाख बिल्डिंग्स हैं जो पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब उन 1 लाख बिल्डिंग्स का एनर्जी ऑडिट करने के लिए एक टीम चाहिए, या अगर टीम नहीं चाहिए तो कम से कम सरमाया चाहिए जो एनर्जी ऑडिट कराया जाए। और तो क्या इसके लिए क्या किया गया है, या इसके लिए क्या फॉरवर्ड थिंकिंग है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर एनर्जी ऑडिट किया जाएगा तो वो किस चीज़ का किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनरकॉन डिवाइस करती है कि जी हम लोग एनर्जी सेवर लगा दें, हम लोगों ने एनर्जी सेवर लगा लिया, अगर हमारे पास एक साउंड इंजीनियरिंग टीम मौजूद ना हो तो हम डिवाइस नहीं कर सकते कि हम एनर्जी सेवर लगाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये जो प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर आते हैं उसके अंदर मार्केट करने के लिए उन लोगों ने उसको आसान किया होता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके साथ रिलेटेड होती हैं। जैसे अगर फर्ज करें एनर्जी सेवर कहता है कि मैं 10 वाट कंज्यूम करता हूं, कोई मार्केटर कहता है, तो आया क्या वो 10 वाट कंज्यूम करता है? इसको चेक करने का या इसको चेक करवाने का क्या मैकेनिज्म होगा? और क्या उसके अंदर जो कबाते हैं, जैसे उसके अंदर एक मरकरी पॉइजनिंग होती है, अगर वो टूट जाए घर के अंदर से मरकरी पॉइजनिंग हो जाती है। और अगर कोई इदारा इस तरह का गवर्नमेंट का इदारा कहता है कि नहीं जी आप ये लगाएं, तो इसके अंदर लिटिगेशन के प्रॉब्लम बाद में इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इन लोगों ने मे बी उसके ऊपर जो पेनल्टीज भी लगाई हुई कि आप लाजमी लगाएं, अदरवाइज हम ये चार्ज करेंगे। सेकेंडली, अगर एलईडीज पे जाते हैं या पंखों पे जाते हैं कि भाई आप ये वाला पंखा यूज करें, ये वाला पंखा ना यूज करें, तो वो क्या मेथोडोलॉजी होगी कि जिस तरीके से आप किसी जगह से वेरीफाई करवाएंगे कि भाई ये वाला पंखा इज एनर्जी सेवर एंड दिस इज नॉट एनर्जी सेवर, और फिर ये जो सारी चीजें, इसके लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत ज्यादा सोच की जरूरत है कि वो कौन सी चीजें जो आइडेंटिफाई की जाएं, और एक इदारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है, मे बी बाय टेक्निकल मैन पावर और इस तरह की चीजें, और स्पेशली विज़ावी कि कितनी सेविंग हो रही है पाकिस्तान में। क्योंकि एनर्जी ऑडिट के लिए शायद मैं बल्ब 1 मिनट में चेंज कर दूं, लेकिन बाद में हमारे इस तरह होता है, मुल्क में इस तरह चीजें होती हैं, और फिर क्या वो 1 लाख कंपनीज का 1 साल के अंदर ऑडिट मुमकिन होगा? ये सारी बातें हैं जो आई थिंक इट शुड बी। इसमें देखें, पहले तो जो कोड्स हैं उनकी मैंने कहा ना कि डिज़ाइन स्टेज पे ही वो चीज़ें कर ली जाती हैं कि जो भी डिज़ाइन अप्रूव करना है कंसल्टिंग फर्म ने, क्योंकि ये मैंडेटरी होगा फॉर द कंस्ट्रक्टर, कंसल्टिंग फर्म्स, और फिर जो हमारी ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसी स्टेट लेवल पे ये चीज़ हो जाएगी। वो तो कंट्रोल है एक उसका आ गया। दूसरी जो सर्टिफिकेशंस की हैं वो भी दी गई हैं कि कहाँ कहाँ की सर्टिफिकेशंस हों। जैसे आपने कहा कि अगर एलईडी होनी है तो कहाँ की होनी है, अगर पंखे हैं तो कहाँ, तो वो भी सर्टिफिकेशन लेवल दे दिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ की हो जाए। फर्दर जो उसको के मॉनिटरिंग का जो आपने कहा वो हमने बिल्कुल इसलिए ऑलरेडी हमने एक देखें रिजीम को डेवलप करने के लिए लॉन्च किया कंट्री वाइड एनर्जी ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स कोर्स जो है हम यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वहीं से ब्रीड आपके आना, सीडिंग वहीं से होनी है, तो उसमें फैकल्टी, उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, उनको हम कर रहे हैं और फुल डे करा। और यही स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करके निकलेंगे तो अगला प्लान यही है कि एनर्जी ऑडिटर्स और एनर्जी मैनेजर्स का एक टीयर उनका जनरेट किया जाएगा सर्टिफाइड। उसके लिए डेफिनेट एनरकॉन हम मिलके करेंगे तक हो सके। आपका बिल्कुल बात सही है, ये इसीलिए ही हाई एंड यूजर्स का कोड पहला फेज 1 बनाया गया। पेप्को मुझे याद है कि तकरीबन उनका डिसेंट नोट की था कि नहीं जी पहले आप लो एंड यूजर को इंक्लूड करें। हमने कहा फिर तो कुछ भी नहीं होने लगा, कहीं से तो हमें स्टार्ट करना है। तो तकरीबन आप 1 लाख कह रहे हैं, हो सकता कम हो यूनिट्स उससे, वो जो हमने नल से निकाला, लेकिन कहा था इससे शुरू तो करें यार, और वो डेफिनेटली दे कैन बियर द कॉस्ट। तो सम ये है इसका जो, बाकी असल में कैसे फर्दर डिटेल में करेगा सर्टिफिकेशन और ये उसके ऊपर। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये जो कोड है ये लागू है जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिल्डिंग्स होंगी, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ठीक है ना सर। तो जब न्यूली होंगी तो उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ें इनकॉर्पोरेट जिस तरह से का डिजाइन लेवल से होंगी, लेकिन 2 इसमें डायमेंशन बन गई, एक न्यूली एस्टेब्लिश एंड व्हाट टू डू ऑफ दोज जो कि पुरानी है। अब वो जो पुरानी वाली उसे हमारा लॉ कवर करेगा, जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट या लॉ जब वो अप्रूवल हो जाएगी उसकी और बाकी रजीम बनेगी, तो ये सर्टिफाइड मैनेजर जब वो हमारा एक बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल, वो फिर हमारा एक जॉइंट
انیشیٹو ہوگا جس میں سے ہم جو ہیں وہ ہر کیڈر کے لیے سیپریٹ سیٹ جو ہے وہ مین پاور کریشن ہوگی. بٹ یہ کہ راتوں رات کوئی ایکسپرٹ نہیں بن جاتا ہے اس میں بھی, یعنی کہ اٹس لیٹ می بی ویری فرینک اباؤٹ دیٹ. بٹ یہ کہ وی آر پرووائڈنگ بیک اپ سپورٹس. جتنی بھی ابھی یونیورسٹیز کے ابھی نسٹ کے پتہ نہیں کتنے بچے ہم سے پروجیکٹس کر رہے ہیں پیس انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج کے تھرو GIK, اور جب ہم نے وہاں پر سیشنز کیے ان کے فیکلٹی ممبرس کے ساتھ, دے آر ناؤ کیرنگ ایکٹیویٹیز آن دیئر اون ان ہاؤس یا کسی انڈسٹری کے ساتھ مل کے. تو ہم ان کو فل بیک اپ, دیر از نو, آپ کسی سے بھی آپ کوشچن کر لیں جہاں ہم نے ابھی سیشنز یا آج لاسٹ 6 مہینے کے اندر کوئی ایسی کیوری ہو جسے ہم نے رسپونڈ نہ کیا ہو ایز سچ. وی آر پرووائڈنگ بیک اپ سپورٹ ان ایچ اینڈ ایوری کنٹیکسٹ ان دا وے ویئر اٹ از پاسبل. سر وہ یہ نا کلچر ذرا کرنے. سر میرا نام جلال الدین شاہ ہے, میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پیکریٹ میں ہوں, پاکستان کاؤنسل آف رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی, کیونکہ ہمارا کافی اس میں عمل دخل ہے. اچھا, ہمیں جو اس وقت ایک پرابلم آ رہی ہے بڑی, وہ یہ آ رہی ہے کیونکہ ہم سولر سیل بنانے میں اور پینل تک ایون انسٹالیشن تک کیپیبل ہیں اللہ کے فضل سے. اس وقت جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا سے سب اسٹینڈرڈس پروڈکٹس آ رہی ہیں, اور کیونکہ ہم لوگ تو پائنر ہے اس میں 1982 سے بنا رہے ہیں, اس وقت جس وقت چائنا کے ذہن میں بھی نہیں تھی یہ بات. تو بہرحال اینی وے ابھی یہ ہے ہمارا پوائنٹ کہ ایسین کی سرٹیفکیشن کی جائے, کم از کم 5% جو بھی باہر سے پروڈکٹ آتی ہے اس میں سے 5% ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے, ہر چیز ہے, ہم سے وہ ٹیسٹ کرائے جائیں, سرٹیفائڈ کرائے جائیں کہ وہ پروڈکٹ کیسی ہے, کس طرح کی ہے, تاکہ اسی طرح سے ہم اس چیز کو وہ کر سکیں کہ یہ کیٹیگری کس میں آتی ہے, اے میں آتی ہے, بی میں آتی ہے, سی میں آتی ہے. اب چونکہ ہم کیٹیگری اے کے پینل بنا رہے ہیں, اب اس کی پرائس اس سے مہنگی ہو جاتی ہے, تو عام جو کنزیومر ایک بازار میں جاتا ہے, مارکیٹ میں جاتا ہے, وہ تو کہتا ہے کہ یہ سستا پینل ملتا ہے, ہم یہ کیوں نہ اٹھا لیں, جبکہ ہم 25 سال 30 سال گارنٹی لکھ کر دیتے ہیں کہ اس کی لائف 30 سال تک یا 25 سے 30 سال تک ہم کچھ بھی ہوگا ہم ریپلیس کر کے دیں گے. تو یہ بڑی بات ہے, کوئی کم بات نہیں ہے. اور اس وقت تو ہاٹ ایشو ہے انرجی کا اور رینیویبل انرجی کا, اس میں بڑا وہ ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی لیجسلیشن ہمیں چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے آپ سے. تھینک یو. اس کے لیے تو سر سب سے ڈائریکٹ فوکل انسٹیٹیوشن جو بنتا ہے وہ کیونکہ جب اس طرح کی ریگولیشنس کی بات کرتے ہیں تو AEDB کا مینڈیٹ میں چیز فال کرتی ہے. ویسے تو آپ لوگ خود اسٹینڈرڈ بناتے ہیں پاکستان کے, تو مینس کہ IEC 61215 1993 کا ورژن جو ہے سولر پینلز پہ اپلیکیبل ہے ورلڈ وائڈ بیسیکلی. تو بیسیکلی آپ انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز اگر کر رہے ہیں تو پھر AEDB آپ کو امپورٹ لائسنس دیتے ہوئے ٹیکس ایگزمپشن کا ایک اس میں کنڈیشن ایڈ کر سکتا ہے کہ جی آپ امپورٹ کے اوپر آپ کا کراچی والی پارٹی جو ہے وہ جہاں پر بھی پورٹ ہے وہاں پر ٹیسٹنگ سرٹیفکیٹ یا ایک لاٹ سیمپلنگ ٹیسٹ کر دے. ایسا تو یہ میرے خیال سے نوید صاحب جو ہے اس پہ زیادہ جو ہے وہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں.